नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राहुल गांधी, जी हां, आपको बता दें कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक नाम जो काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है वो है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का। इस वक्त अकेले राहुल गांधी पूरे के पूरे एनडीए पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त बीजेपी की कहीं ना कहीं जड़ों को काटने का काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी एक एक कर उन मुद्दों को उठाने का काम कर रही हैं जो 2024 में बीजेपी के वोट बैंक को खतरे में डाल रहा है। चाहे वो मणिपुर हिंसा का मुद्दा हो, महिला आरक्षण बिल का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर अब यहां पर अग्निवीर सुरक्षा का मुद्दा हो। यहां पर जिस तरीके से अगर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को राहुल गांधी उठाते हैं, अडानी के मुद्दे को राहुल गांधी उठाते हैं, संसद के उद्घाटन में, नए संसद भवन के उद्घाटन में आखिरकार क्यों महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जाता, इस मुद्दे को राहुल गांधी उठाते हैं। मीडिया को आखिरकार कौन कंट्रोल कर रहा है, इस मुद्दे को राहुल गांधी उठाते हैं। और आखिरकार ईडी सीबीआई किसके हाथों की कठपुतली बनती जा रही है, इस मुद्दे को भी राहुल गांधी उठाते हैं। राहुल गांधी जैसे ही इन मुद्दों को उठाने लगते हैं तो विपक्ष भी धीरे धीरे कर इन मुद्दों पर प्रतिक्रिया देता है, बीजेपी पर हमला बोलता है। अब राहुल गांधी एक जो बड़ा चेहरा बनते जा रही हैं और एक ऐसी हस्ती के रूप में निखर कर आ रही हैं जो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त जहां एक ओर एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई है तो वहीं दूसरी ओर राहुल वर्सेस मोदी की लड़ाई भी देखने को मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि इस बार पीएम उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से चेहरा हो सकते हैं। हालांकि कई बैठकें हुई हैं लेकिन अभी तक ऐलान किसी भी नेता को लेकर नहीं किया गया कि इस बार विपक्ष पीएम उम्मीदवार के लिए किसे आगे करेगा। सर्वे रिपोर्ट्स को अगर समझे तो यहां पर राहुल गांधी का नाम दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर यहां नीतीश कुमार का नाम आता है, दूसरे पर राहुल गांधी, तीसरे पर ममता बनर्जी और चौथे पर शरद पवार, और ऐसे ही ये लिस्ट बनती जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी की चर्चा इसलिए है क्योंकि वो सीधे सीधे उनकी मोदी से फाइट देखने को मिल रही है। और ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं जो 2018 के चुनाव में जिनका मजाक उड़ाया जाता था, जिन पर मीम्स बनते थे, जिन पर भारतीय जनता पार्टी तंज कसती थी और राहुल गांधी उनका जवाब भी नहीं दे पाते थे। लेकिन इन 5 सालों में या यूं कहें कि 4.5 सालों में राहुल गांधी ने खुद को जिस खूबसूरती से बदला है, न केवल राहुल गांधी ने अपनी छवि को बदला बल्कि कांग्रेस पार्टी की भी छवि को बदला। परिवारवाद से निकलकर अब गांधी परिवार जिस तरीके से जनता के बीच जुड़ रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इस बदलती छवि के चलते कांग्रेस भी विपक्ष के बीच अपने वर्चस्व को बढ़ता हुआ देख रही है। इसीलिए तो यह भी कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो बागडोर है वो कांग्रेस संभालती हुई नजर आ रही है। इसी बीच देखने को क्या मिलता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी उतर जाते हैं। एक एक कर वो हर राज्य में जाते हुए नजर आ रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान, कभी तेलंगाना और आखिरकार अब मिजोरम। जी हां, राहुल गांधी आज मिजोरम गए जहां पर उन्होंने पदयात्रा निकाली। 5 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा के बाद राहुल गांधी किस तरह से बीजेपी पर बरसते हुए नजर आ रही हैं, सुनिए जरा। It's an honor for me to come here today and meet so many of you while walking through the streets of Ezwa. Aizol ko pui kal taka karon kal the wang le bitam tak ka mu thei cheu wang he kalom me mani. My impression of Mizoram was formed when I was 16 years old, when I came here with my father in 1986. Sa khaza ko soviet paruka tlerol veng wong kani line kapatren kan lokal ka karon kal masak ber ania. And if I was to describe my impression of the people of Mizoram, I would say gentle, kind, affectionate people.
Mizo mi pui ka ngai dan ha Mizo ta chia se khati lai khan an gil ne ya an hoi homa an bulama nuam kati lo thei lo ni. People with a strong sense of community, people who respect each other, and also people with ideas different to theirs. Khotla ngai za to na te mi hing pui za na ton nei thatak te tin ngai dan thatak mai ram chung cha nei te an ni ti po ka soi bo kang. And it is something to be very proud of. A culture among many different cultures in India, each one equally important. India ram culture ranga culture chi rang tak mai nei te an ni kati bo kang. You have a spirit of service before the self, a spirit of altruism. Midang te ngai poi mo em na lo mai na te po in nei te po ka ria. And these are very, very powerful values in the 21st century. Kum sabi som di pakhana tan hian hek hi man ro poi mo tak ani ti ka ria ni. We have a old connection with the people of Mizoram. Mizo mi pui te hian in kung kai ta tiket tak kan nei ya. And I remember when the peace accords were signed and a brilliant new era began for the people of Sa ka Mizoram. sombriat paroka rem na thuthung sai na ni du khan hun thar to poi mo taka kan chuang kai ani kha. Maybe many of the young people here do not remember, but we transitioned from a violent Mizoram to a peaceful Mizoram. Helaya na panglam chuan in re phato lo mai the a khami hun atang khan in be na thisen luan na tanga hun ral muang taka kan lut ani kha. The older generation, of course, knows the price they paid for the hatred and the violence that was spread in this beautiful state. Helai ram moi taka in huat na le thisen luan ton na lo ti top tura boruak lo thleng kha alo mom tak mewa. Some months ago, I walked across India from Kanyakumari to Kashmir. Tlem lai deu to khan kania kumari tanga mar to Kashmir thleng ke kan kalani kha. And we walked for almost 4,000 kilometers. Kem sang li don lai kan kal a. Today we walked 2 kilometers. Voina roson kem ni vel ora ni kha. But the message I wanted to give was the same as the one I gave when I walked across India. Amaro chu khulai ka kalai mi tho kha ka thuran ken chu ni e. The idea of Bharat Jodo, one India, India ram pum khat aum theda tur kha tuna kan thu ken tho hi ni. that respects each other and itself, Mani bidang te anga za thiam ton ta te. that is tolerant, La tor theina te. that learns from other ideas, other religions, other languages, Midang culture atang te, midang sakhuan atang te a zir tur le ngai san sak na te a omani. and that loves itself as a whole. Chu wang chu khami pum pui khan in mangai ton na te a om tat ani. And that is the idea that is under attack by the BJP. Tu na hian kha thil nge mai kha he BJP ho hian aron be le mu re omanti ber ani tlat sia. They attack different communities, different religions, different languages. They spread hatred, violence in the country. Nam rang rang te ko rang rang te culture rang te an hua chumi ai chuan in hua ton na te in zalo ton na te in noi che ton na te hi aron ti dar ta ani hi. They spread arrogance, lack of understanding, Midang hiat thiam du lo na te in tor thei lo na te aron ti chuak thar ta zela. and this is completely against the idea of India. Hei hi India kan te INDIA ina adu lo berle ado ber ani tani. Because the idea of India that we are used to, the idea of India that we believe in, is one that respects everybody, is affectionate to everybody, protects everybody. BJP lalma tun ma India kanantina achunga mi zong le culture le sakwa zong za an lo na te kha kan duania.
Some months ago, I went to Manipur เรียกว่ากัลตาคานมณิปูระแต่กันกะละ and I could not believe what I saw. กะหันบุคทิลโอยอมโปหารกติยา The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. มณิปูรกันติค่ะอันติเชวิกตอนที่ BJP เอาเฮียน It is no longer a state. It is now 2 states. คิลายคีสเตทปะคตาอมชีนค่ะตัวน่ะชวนสเตทประเทศอมังอันติตาดิ People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. คิลายตัวตุตามตักเตไม่เชียเตเลยปอยสวยเราเตอันตัวรันทีนักการาเขียนเฮกัน Prime Minister ปุยเราเฮียนไอ้กตันมาไงเราลูปอลติทักโลนี่ It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in กั Manipur. น Prime Minister เตฮีกัน President เตฮีอิสราเอลทิลเทงีอันบวยปุยเอ็มลายันอันรำชุงไงมณิปูรทิลเทงีเองมันไงเราตุงีอามักกัดติงอลอันนี้ If you look at our national media, you will find story after story after story, talk show after talk show about what is going on in the Middle East. มิดลีสต์ทิลเทงจันจินเฮอินเดียรำจันจินเทดักตุซงแน่เลยฮันอัตมเอ็มไม่นี่ But nobody in the national media speaks about what is going on in Manipur. อามารอจูอินเดียนนัชลาจันจินเทดักตุโฮทั้งสิงายันมณิปูรจุงจางเทดักจากเลยเทดักตุปักขัดมันอมลอยมักกันนี่ Nobody is talking about the pain, the misery that has been caused there. คิลายมีปุยหูตั้มตะกินันตรตังอันกัลเมกิเจียทำมาปนไงเราสวยทำมาปนไงเราอามักกัน And I simply cannot understand why the Prime Minister has not visited. Prime Minister ปุยปอยันอลหันกัลเลยมักกัติโตบไทยเราเนี่ยมาเลย It is something to be ashamed of that the leader of our union has not traveled to the state of Manipur after what has happened there. อินเดียรำมังแรงรวงลัลเบรดิซีนะอารามช่วงกติขบมายันบวยตะเคียนบวยตะคัดมาละตอโลหิทิลมักโตบอดีล้อมี And Manipur is just a symptom of the problem. ทินมณิปูรกันโมคีทิลดังติลังตูไอ้ทีน่ะไม่อันนี้ฮิติเทียงอู You can see the same problem in a smaller form in many different parts of the nation. อินเดียรำฟรังทังเตลมาโซกินเตงโซเขาปุลาโปเฮกเตียงซงซุยกันมุเมกแรงบอกกันนี่ People from minority communities feeling uncomfortable. นำเต็มเลยแต่นาวแต่เขาชัวตัวนั้นยันอมดานอันตานเทียบเทียมไทยตลอดเราอมลุตุกโตนี่ Tribal people feeling uncomfortable. Tribal เขาตานปอยันอมเละเทนั่นนี่โตเราแรงกันนี่ Dalit people feeling uncomfortable. ดาลิเท่าเราจุดยังบกจุเราดีอะ There is a oppression being carried out on the people of India. อินเดียมีปุยเตฮีมินลำเชียมินรับเบ็ดตกขึ้นในคนไม่ดีบีเจพีเอายัน And I view it as an idea, as an attack on the idea of India. อินเดียกันติกันไงดานชูก็มีค่ะอารอนเบยน่ายันกันไงเราเท่เราวะ So what has happened in Manipur is of course an attack on the people of Manipur. จูวางชวนมณิปูระอันตรน่าสงสกีมณิปูรแต่ตรน่าอันนี้กันติเราเท่เราวังอ่ะ But it is also an attack on the idea of India in Manipur. จูบากาชวนอินเดียรำกันเตียกันไงดานที่นะคะมณิปูระเขียนอันรับเชเมกอันติเชเมกันนี่ติโปอาศัยไทยบอกกันนี่ It is the duty of every single Indian to protect every single religion, every single culture, every single language, every single tradition of this country. อินเดียเฮียนสกาเฮียน culture ตินเตน้ำตินเตสาขตินเตทรงฮีอันสวายหุมฮีมีอันอันนี้ตอลไม่นี่ And that is what the Bharat Jodo Yatra was about. เฮ้ยเขากันกองสอนนะขี้ไล่กันกองสอนนะมาสาปกันเฮ้ยกันตุ้มเบอร์กันเวเบอร์อันนี้แรงอันนี้ We are fighting an election here, เฮ้ยไล่จน election กันในโดนเมกะ and I would like you to consider what the government has done over the last 5 years. เฮ้ยไล่กุมกัลตาชุกัน he MNA fisher karian again titi ka ngai to na lo luta
drugs are spreading rampantly across the future generation. Mizoram thalai dang te ti seturin kan kram chunga hian drugs la om zong zong hi anga pinangap to 250 young lives have been extinguished because of this. tu nai lo ka po thalai uyom tak tak zani somnga lain nun nan chan ti kan thia a And while the BJP attacks your culture, your religion, your tradition, the MNF supports them in Delhi. BJP sarkarin nang mani culture te nam nun phuk te in sa khwate aron be mia lai hian helai mne sarkar hian an mani khana thlop thei amak ngut lobby One of the people who I was walking with runs an NGO, and he fights the drug menace. tu na karon kalna ka ton pakhat chu NGO nei tu pakhat drugs lampang do tu te si kami ni a So I asked him, what is the main reason for drugs in Manipur? Mizoram. eka tige Mizoram hian hatie me ma drugs sa tamtak le tin ama khakan zota And his immediate answer was, the young people of Mizoram do not get jobs, and so they do not see a future for themselves. ani soidana chuan kan Mizoram thalai te hian na an nei lo wang hian an tan hian invent po harani tiani Over the last 5 years, the MNF government has created only 2,000 jobs. kumakal ta chung khan he mne sarkar hian thalai te tan na sanga chau sang thi chau asiam ti kha asia thian sa tha kani Your infrastructure here, your roads here are in shambles, in kong te kan mura hian asia ti hian reng maya and they're destroying the economic future of the state. तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से राहुल गांधी ने एक बार फिर से कई मुद्दों पर सीधे सीधे मोदी सरकार को घेरने का काम किया। सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या वाकई में इस बार देश की जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर चुकी है? क्या राहुल गांधी वाकई में इस बार मोदी लहर को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे? क्योंकि विपक्ष तो यही दावा कर रहा है। सर्वे रिपोर्ट्स भी इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि क्या वाकई में इस बार राहुल गांधी सत्ता में वापसी करते हुए बीजेपी को एक तगड़ा झटका दे पाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।